अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट फ्लो का फोर्स में एक कंडक्टर पे जिसमें करंट बह रहा हो उसको पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि इफ़ एनी कंडक्टर इज placed in a magnetic field, it experiences force. Such force will be, number one, the force will be directly proportional to the produced current. The force will be directly proportional to the length of the conductor. The force will be directly proportional to the magnetic field. And number 4, the force will be directly proportional to the angle between current carrying a conductor and magnetic field B. मैथमेटिकली हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट टर्म में जो है ना वो है करंट, सेकेंड टर्म जो है ना लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, थर्ड फॉर्म इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर एंड अदर वन इज द साइन थीटा। F is equal to ILB if sin theta is 90 degree, as we know that there is always 90 degree between force current the direction of current and magnetic field is 90 degree, therefore sin 90 degree is equal to sin 90 degree is equal to 1। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं sin 91 की इक्वल है, therefore force is equal to ILB। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक इंडक्शन को हम अलग कर लेते हैं, फोर्स अपॉन आई एल इज इक्वल टू बी। ये बी इन इक्वेशन नंबर 1 इस बी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अगर ऑफ अ कंडक्टर, therefore respected all, this is the equation of magnetic of a current carrying conductor in uniform magnetic field. Thank you so much for watching this.